वेलकम और जी अभी शुरू करिए. Okay, so welcome viewers to DCSAFF 2022. We have a double treat for our viewers. During this festival, not only will you get to watch a masterful film, Matto ki Cycle, during the festival, but today we get to explore this film today with incredibly talented people who are chiefly responsible for its creation. M. Ganiji created the story, directed the film. Kamesh is its editor. We know Ganiji from his heartwarming short film Gubare. He's also created documentaries, Muzaffar Nagar Abhi Baki Hain. And we all know the lead actor, Prakash Jha ji, as a film producer, actor, director, and screenwriter from films like Damul, Rajniti, Chakravyuh, Arakshan, Satyagraha. Welcome, Gani ji, Kamesh ji, and Prakash ji. We are honored and delighted to have you with us today. Thank you very much for having us, and it's such a pleasure, always a pleasure. I have very fond memories of the festival I had attended a few years ago, and I am so happy that you have invited Gani's film Matto Ki Cycle as an opening night film, and it is such an honor and a pleasure. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये मौका दिया है, हमें हमारी फिल्म दिखा रहे हैं और ये हम लोग बात कर रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया। कामेश हमारे फिल्म के एडिटर भी हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच। ये हमारा प्रिविलेज है कि आप आए हैं और हमारे ऑडियंस को ये फिल्म देखने का मौका मिल रहा है। So Matto ki cycle for our audience this is the story of a day laborer, Matto, who depends on using his bicycle to get to Mathura to seek work every day. And what happens when that bicycle is crushed by a passing tractor? कई बार ऐसा होता है, मैं गनी जी से बात कर रहा था कि मैं लाइब्रेरी में जाता हूँ, कोई किताब खोलता हूँ, and just looking through it, ये लगता है ये सही किताब है। आपके फिल्म की ट्रेलर देख के वही लगा मुझे। ये कोई एक्टिंग नहीं है। अब मट्टो की जो जिंदगी है, Matto's life is so different from our own, but the mark of a good film, in my opinion, is I can relate to this immediately. ऐसा लग रहा है कि ये कहानी अपनी भी हो सकती है। जिंदगी टोटली अलग है, लेकिन उसके लिए कुछ चीजें लगाव होनी चाहिए। स्टोरी has got to be well written. Characters जो हैं, bringing them to life. जैसे कि when I look at them, ये लग रहा है ये कोई एक्टर नहीं है, असल में कैरेक्टर्स है, वो देख रहा था, वो एक्टिंग आती है। Whole thing stitched together, जो कामेश जी आपने एडिटिंग की है, बहुत बहुत बढ़िया है। So I'm going to start off, शुरू में गनी जी आपके साथ कुछ इस स्टोरी के बारे में बताइए, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों था कि ये कहानी बताएं? जी, तो ये कहानी दरअसल मैं काफी वक्त से इस कहानी के आसपास रहा हूँ। इनफैक्ट जिन लोगों की कहानी है ये, उन लोगों के आसपास मैं रहा हूँ, बहुत वक्त मैंने गुजारा है उन लोगों के बीच में। तो हमेशा से था, जब मैं फिल्में बनाने की तरफ बढ़ा, तो कि यार कोई मौका मिलेगा तो मैं एक कहानी कहूंगा जो इधर की होगी, इन लोगों के बीच की होगी। और ये कहना इसलिए भी था कि बहुत बड़ी तादाद में ये लोग हैं जो हमारे चारों तरफ है, हमारी जिंदगी के हर पहलू में इनकी भूमिकाएं हैं, मुल्क को खड़ा करने में, बनाने में इनकी भूमिकाएं हैं, लेकिन इनकी स्टोरियां गायब हैं, इन्हें देखना लगभग हम लोगों ने बंद कर दिया है। तो ये था कि यार मौका है तो मैं इस कोशिश को जरूर करूंगा, और इस कोशिश को करने में बड़ी भूमिका मेरी अगर है तो उससे बड़ी भूमिका हमारे जो फिल्म में बाकी फिल्म बनाने की प्रक्रिया में जो लोग थे उनकी है। झा साहब की बहुत बड़ी भूमिका है, अगर वो थे तो ये फिल्म हम बना पाए हैं और आपके साथ बात कर पा रहे हैं। अच्छा, और ये फिल्म बनाने में कितनी देर लगी, और जो एक्टर्स आपने चुने, जैसे कि प्रकाश जी थे,
How do you go about finding the right actors to play these parts? Like I said before, मुझे ये नहीं लगा फिल्म देख के कि कोई actors है. ये असली जिंदगी है. How long did it take you, and how did you select the people? हाँ, तो ये था कि हम लोग जब मैं, कामेश और पुलकित जो फिल्म के डायलॉग राइटर हैं, हम काफी देर से लिख रहे थे और उन लोगों के बीच में ही थे, है ना. तो और हम लोग एक थिएटर ग्रुप चलाते हैं मथुरा में. अच्छा. तो हाँ, ज्यादातर लोग उस थिएटर ग्रुप में इसे नाटक के तौर पर भी कर रहे थे. हम लोग ड्रामा कर रहे थे, तो उसमें लोग कर रहे थे काम, और उन्हीं लोगों को जो ट्रेंड किया था वही लोग सिनेमा में आए. झा साहब की तरफ जाने की बड़ी वजह थी कि मैं इनके सिनेमा से बहुत प्रभावित रहा हूँ. इनका सिनेमा सेंस और इनकी समझदारी जो थी वो मेरे बहुत फेवर में थी. एक तो क्योंकि इन्हें वो सारी चीजों से बहुत करीब से मैंने इनका दामुल, जैसे आपने जिक्र किया है, दामुल देखी है, राजनीति भी इनकी देखी है, और सत्याग्रह भी देखी है. और तो था कि, और एक ये था कि एक्टर के तौर पर मैं चाह रहा था ऐसे व्यक्ति को अगर फिल्म में मेन कैरेक्टर के लिए मिल जाए, जिनके पास जो मशहूर तो हो लेकिन लोग पहचानते न हो. तो क्योंकि ये प्रकाश झा साहब हैं और इनको एज अ डायरेक्टर तो सब जानते हैं, जी, है ना. बिल्कुल. लेकिन कि हाँ, आम लोग जो है उनके चेहरे से उतने वाकिफ नहीं है, खास तरह के लोगों को छोड़ दें तो ये था कि अगर ये बात उन तक पहुंच जाए, कैसे भी ये स्क्रिप्ट वहां पहुंच गए तो हम कर पाएंगे. तो ये बड़ी भूमिका कामेश ने अदा करी. कामेश झा साहब के टच में थे, वहां इनके कुछ काम कर रहे थे, तो मैंने इन्हें आग्रह किया कि कामेश, ये स्क्रिप्ट कैसे भी करके तू झा साहब तक पहुंचवा दे, और फिर मैं, अगर वो उनकी पसंद आएगी तो मैं उनसे कैरेक्टर कराना चाहूंगा, इसका जो लीडिंग कैरेक्टर है. ये प्रक्रिया ऐसे, इनकी कास्टिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो ऐसे हुआ. जी. अच्छा. तो प्रकाश जी, मैं आपसे पूछता हूँ, आप तो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, स्क्रीन राइटर, ये सब इसमें सर यू मस्ट बी इनक्रेडिबली बिजी. फिर भी मुझे पता चला यू स्पेंड मंथ्स प्रिपेयरिंग योरसेल्फ टू एक्चुअली बिकम मट्टो. What drew you to the story and to dedicate so much time to this process? And please share with us how you went about doing this. You see, Kamesh knew my editor, Santosh, and they brought this script to me. And it was lying for some time because I was really, as you said, busy with several projects, and I didn't read it for a few months. And Gani used to keep calling the editors, padha ki nahi, and then eventually, he spoke to me one day and said ki aap thoda padh lijiye ek baar. So after a couple of months, I just, one fine morning, I took it and I started reading it, and I couldn't put it down because it was, for us who are filmmakers, who have been students of cinema, this was one script which was absolutely pure cinema. There is no trickery, there is no kind of going roundabout or taking a shortcut. It is just the story as it's happening in the hemisphere. The characters were real, the location, the incidents, the drama, the issue, the crisis, everything was so real. And I thought, बहुत दिनों के बाद एक प्योर स्टोरी मिली है. So I called him up and I said, यार मुझे मजा आ गया पढ़ के, इसको बनाओ, जैसे लिखा तुमने वैसे ही बनाओ. Then he dropped the bomb. He said, look, ये आपको, thank you very much, आपने स्टोरी अच्छी लगी, but I have sent it to you for considering the role of Matto. So I was quite surprised, and I said, look, we'll talk about it, because I don't look Matto, and my personality is completely, if at all opposite. I am I'm known to be a very kind of like, hands-on producer, director, writer, and all kinds of things. I like acting. Over last several years, I have been attending workshops primarily to understand the whole craft of acting.
So I can communicate with my actors and I can get the best performances from my actors. And off and on, I also do roles, and I had done Sand Ki Aankh, I had done Jai Ganga Jal, and I had done some short films. So he immediately say, nahi, aap acting to karte hain. So then we met, and I asked him, why did you want me to do it? He would have gone to an actor. He said, the actor ke paas to main gaya tha, lekin mujhe actor nahi chahiye. मुझे वो आदमी चाहिए जो इस माहौल को समझता हो, जानता हो. And that kind of, took me in. And of course, when I decided that I will do the character, I made several trips to Mathura, and I spent a lot of time with Gani's theater people. Then slowly came down to the street people, and then started understanding them, then started sitting with them, chatting with them, because I needed to find that character. I needed to find Matto in Mathura. And it took me some time. It really took me some time to be able to find it. In fact, I was getting a little nervous because even when we went for the shooting schedule, I still hadn't found him. I was acting, and I didn't want this character to act. Right. So I just wanted to be him, and it just happened. It just happened in a click. It's a process we actors go through, and I was employing all the processes, and then eventually I found him. And once I found him, it was easy. It was not very difficult, because then I just had to be there. And how long did all this process take? As you, it took about several trips. It took about 5-6 months. Yeah. Wow. Now there's a great story I heard, and I want to. You got so much into the character of a day laborer that one day you were standing out there along with other day laborers, and I was sitting in. You were sitting, sharing a beauty with somebody. Yes. और हुआ कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स आए, उसके आगे क्या हुआ? हाँ, एक बंदे आए, वो मोटरसाइकिल के ऊपर में, वो बोले, अच्छा तुम अच्छे दिखते हो यार, आ जाओ, थोड़ा सा काम है 3-4 घंटे का. तो मुझे और 2 आदमी, दोनों को बैठाया, मोटरसाइकिल पे लेके गए, हम काम करके आए उसके यहाँ. अच्छा. So पूरा का पूरा मट्टो ही बन गए थे उस वक्त. That's fascinating. Yeah. That was the idea. That was, Gani was very clear about his story. His story was simple. He was clear. He knew how he wanted to shoot it. He was, it didn't take me much time to understand that, his idea is clear, his intention is clear, and his technique is correct. So, and Kamesh, a known editor, or the DOP that he got, and the team was quite good. So I just kind of submitted to him. I said, now I'm just the actor. I don't want to do anything else. Just kind of keep a watch on me. That's it. So on that point, I was wondering, you are a strong director in your own right. Gani ji, aapki vision clear thi. How did that come together? Because what you just said, I'm just being an actor directing. How hard was that for you, Prakashi? Ki koi aur mujhe direct kar raha hai, but as a director, I want this thing from my actors. Was it a hard transition? Or Gani, inke saath kaam karne mein, if I'm no director, but I would have been apprehensive कि मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, मैं कैसे direct करूँ उनको. But I think your storytelling just came to, how did all of that come together to fit together in these new roles for you? So that was his problem. I had no problem because I had committed. And he never showed any kind of nervousness towards that. He knew exactly what location, how to shoot, what shots to take. He knew everything. With his team, he was working things out, and I understood the scene when we got there. And I only had requested that, make the film exactly as you have written it. It should not change. And he kept to that. Very nice, very nice. Now,
गनी जी, I'll go back to you. आपने जो films, I'm familiar with गुब्बारे, अभी ये मट्टो की साइकिल, I'm familiar with the story now, but आपको इन कहानियों में what drives you? ये ऐसी कहानी आप लिखते क्यों हैं? वो कोई ऑडियंस के साथ छू लें, to connect with them. What is the process कि आपको कोई कहानी चुनते हैं, क्यों चुनते हैं, और आपकी कोशिश क्या होती है कि ये ऑडियंस के साथ कैसे कनेक्ट करें, क्यों कनेक्ट करें? जी जी, तो ये बहुत मुश्किल बात नहीं है किसी भी राइटर के लिए, मेरे ख्याल से ये होता ही है। और वो जिस तरह की फॉर्मेट में कहानियां सोचते हैं, लिखते हैं, तो मेरे साथ भी वही था। मैं जिस दौर में हूँ, जिस वक्त में मैं दुनिया में हूँ, मेरे आसपास जो मैं देख रहा हूँ, जो घट रहा है, वो मुझे प्रभावित करता है। वो अलग अलग तरह से, और वो जो प्रभावित करता है, कई चीजें उनमें से कभी आपको क्लिक करती है कि यार ये बात कहानी के रूप में कही जा सकती है, फिल्म के रूप में कही जा सकती है, और लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो हाँ, डेफिनेटली वो आसपास जो घट रहा है वो मुझे बहुत प्रभावित करता है। तो वहां से, और ये भी है, कई बार हम दुनिया का लिटरेचर पढ़ते रहते हैं, है ना, लेकिन फाइनली वो लिटरेचर बेशक मैं पढूं, लेकिन उसके बाद फिर मुझे अपने आसपास की कहानियां दिखती हैं। जैसे होता है ना, आप किस्सा गोई, हिंदुस्तान में एक विधा है कि आप एक जोक सुनाइए, फिर मुझे कोई जोक याद आ जाता है। तो मेरे साथ ऐसा है कि मैं कोई फिल्म देखता हूँ या कोई नॉवेल पढ़ता हूँ, तो मुझे मेरे आसपास की कोई कहानी दिख जाती है, अरे कि मेरे पास तो ऐसी कहानी वो फला के साथ हुई है, ये हुई है, तो फिर मैं उनमें से, और वो लोगों को इसलिए शायद टच करे क्योंकि उनके बीच की कहानियां हैं। वो कोई बहुत, मतलब मैं फिक्शन ऐसा नहीं कर रहा जो फैंटेसी हो या वो, है ना, तो वो है, शायद वो काम कर रही हो, लोगों के बीच में काम करे। जी, अच्छा, तो वही सवाल थोड़ा रूप बदल के मैं प्रकाशी आपसे पूछता हूँ. Your films always tend to have some kind of a message or a theme behind them, social, political, that the audience can come away with. What would you want the audience, what would Matto want the audience to take away from this film? I don't know, I think what this story did to me was that every single day I come across, right from my building, the guy who is sweeping the floors, the guy who is guarding, the guy who is at security, the guy who is in auto rickshaw, the lady who is selling vegetables at the corner, they all are, what we are constituted of. We are made of them. They build our roads, they build our buildings, they build our infrastructure, they build the flyovers, they build the train railways, everything. And we don't even see them. We don't even know about them. We don't even feel them. This is the most important thing, that feel. We don't feel them. Yeah. Only when a pandemic arrives, you see tens and thousands and hundreds of thousands of these people coming out of their little holes, yeah, and walking down thousands of miles to their homes. And then you realize, oh my God, this is the humanity which was serving us. That's do right. they have children? Are they married? What about their health? What about their education? What about their dreams? What do they live on? And when I read Matto's story, I said, my God, this whole family's life depends on this bicycle, which has gone old, older than the daughter. Yeah. Yeah. And all he wants is to buy a new bicycle. That's it. And he's struggling. And this must be the story of thousands and hundreds of thousands of people living in the villages on the cusp of these towns and the developments which are taking place. My God, this is what, it opened a little window for me to look into all this. And I said, this film must be made. Let this window be opened for the rest of the world. Let us understand them. Let us at least look at them. Let us have some compassion for them. Let us have some
feelings for them. That's all I wanted. That's wonderfully expressed. I think that is the magic of Matto, right? कि ये पता चलता है वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं. There's really not that. The type of aspirations are kind of different, but at the core, seeing that humanity and sharing that, I found that magical. Even in the short pieces I saw about Matto, very well expressed. But now on that same thought, आप दोनों के लिए, तीनों के लिए actually, what makes a film good? कोई कहता है success at the box office. It could be that. I mean, but what do you said you looked at the script and you were drawn to it. What would you say is a good film for our audience? How would you rate a film to be good or successful? I'll have to be a god to be able to, say or make any prophecy about this. But quite simply, it's the story where the grandmother tells the little girl to put her to sleep. Those are the stories which are the best stories. If your film connects with the audience, connects, the characters connect, the issue connects, the story connects, a film speaks to the audience, because this is the only art which is comprised of all the arts and crafts where the audience becomes a part of the screen. When you're sitting in the cinema theater, lights go out, you are not even aware of the guy sitting next to you, sharing the chair, the hand of the chair. You still do not, you are just connected to the screen. And that is the beauty of cinema. If you get connected, it's beautiful, the film. If you don't get connected, it doesn't work. Simple. Very well expressed. हमारे जो DC साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल है, उसमें ज्यादातर लोग आते हैं, कई लोग आते हैं जिनको सिर्फ एंटरटेनमेंट या अच्छी फिल्म देखनी है, लेकिन ऐसे भी कुछ है ऑडियंस में लोग, और साइजेबल नंबर जो खुद एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स है, एमेचर हो, अलग हो. मैं गनी जी, कामेश जी, आपसे पूछता हूँ, आप उनके लिए क्या एडवाइस दे सकते हैं? इनके पास काले रंग की और पीले रंग की गोलियां हैं, गनी साहब के पास. वो प्रिस्क्राइब करते हैं, खिलाते हैं. तो ये तो एकदम ठीक कह रहे हो. तो इसकी कोई गोली होती नहीं है असल में, है ना. ये गोलियां तो उन्हें खुद खोजनी होंगी, है ना. इंस्पायरेशन जो है वो हमारे आसपास, जो उन्हें अपने तरीके से उसे खोजना होगा. हर व्यक्ति की जर्नी अपनी तरीके की होगी. तो लेकिन हाँ, ये है कि वो गंभीर रहे चीजों के प्रति. जैसे कई लोग फिल्म मेकर है, कुछ भी बनना चाहते हैं. अभी एक मुश्किल जो बात है, पिछले दिनों एक व्यक्ति मेरे पास आए और फिल्म चल रही थी सिनेमा हॉल में, और वो मुझे आकर के कह रहा है कि सर कमाल की फिल्म है और आई एम फिल्म मेकर, और नया लड़का था वो, और मैं कमाल की फिल्म बनाई सर आप. तो मैंने कहा तुम पिक्चर तो देखो जाके अंदर, कि हाँ तुमने देखी पूरी, कि नहीं पूरी नहीं मैंने देखी. तो मुझे बड़ा मतलब खराब लगा कि अभी ये एक जो दौर, इससे निकलना चाहिए. तो आप जो कर रहे हैं उसे बहुत ईमानदारी से और मेहनत से उसके लिए आप बने हैं, तो फिर निश्चित रूप से आप वो रास्ते भी खोज लेंगे कि एक अच्छे फिल्मकार आप बने. पर फिल्म का ये हो गया है कि फिल्म अब डिजिटल हो गया, सब कुछ फोन है, तो आप फिल्म बनाओ, अच्छी नहीं बनेगी, दूसरी अच्छी हो जाएगी, तीसरी और अच्छी हो जाएगी. हाँ, बिल्कुल. फिल्म आपको बनाते रहना पड़ेगा अगर आपको फिल्म बनानी है तो इससे मैं दो चीज का समझ रहा हूँ. एक तो कामेशी, जैसे आपने कहा कि अपना काम करते रहो, डू नॉट गेट डिस्करेज, जो है करना चाहिए. और गनी जी, आपने जो कहा कि कोई गोली नहीं होती है, कोई फॉर्मूला नहीं होता है. जो अच्छी कहानी होती है, अच्छी फिल्म होती है, वो खुद की होनी चाहिए. जैसे कि आपने देखा था मथुरा में, आप उस माहौल में रहे थे, यू लर्नड ऑल ऑफ दोस थिंग्स.
तो जो असलियत ये थी, it comes from your own experience. Tell your own story. Don't look for a formula. कोई गोली काली गोली मत ढूंढो. That's great advice. Thank वो भी, हाँ, वो भी एक तरीका है कि वो आप कुछ भी बना सकते हैं, फिक्शनाइज भी कर सकते हैं चीजों को, लेकिन आप जो कर रहे हैं बहुत मेहनत से उस पर सोचिए और उस पर लग के करिए, आपके दिल से बनाइए उन कहानियों को, तो निश्चित रूप से वो आपकी पिक्चरें होंगी और हम आपको देखेंगे। आपकी अगली स्क्रिप्ट रेडी हो गई सर मेरे लिए? राधे राधे, मैं आपने शुरू में मेरा तो आवाज नहीं आई थी आप तक मेरी, तो वो चल रहा है काम। चलो क्या बात है. You know, we are so excited to see this film start of November. I know it's already been released, done very well in Busan. We can't wait to our audience. This is such a treat. You got a personal glimpse into the creation process. This film is definitely not to be missed. Check out the trailer. I think you'll have the same impression I did. Before we close, Prakash ji, Gani ji, Kamesh ji, any parting thoughts for our audience? Believe in yourself. That's the most important thing. You might fall down 7 times, but get up 8 times. Wonderful. Believe in yourself. Chaho to nayi cycle le aao, get back on it and keep moving. What a wonderful thought. पक्का मिलेगा. और जो एक बात और भी मैंने अब मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ये जो हम कहते रहते हैं ना, इंस्पिरेशन, जिसके अंदर सपने देखने की और सपने से लड़ने की ताकत होती है ना, वो कोई भी नहीं रोक सकता उसको, वो कर ही लेगा. क्या बात है. कैसे भी करके वो कर लेगा, वो पहुंच जाएगा ऊपर. On that wonderful thought, thank you so much, Prakash ji, Kamesh ji, Gani ji. We are very excited to see the film, and I would be remiss if I didn't make mention of our sponsors who for the last 12 years have made this festival possible, and perhaps even more so, the untiring work that Manoj ji, Geeta ji have put together, and all the volunteers. It's not a simple thing to bring to a festival, and it brings so much to the community. So thank you to all the organizers of DC South Asian Film Festival, and most of all, to our viewers, the audience who make this possible. Thank you. We look forward to a great festival. I know we're all going to enjoy Matto Ki Cycle very much. Thank you, Ji. Thank you. God bless you. Thank you so much.